हाँ जी, हाय। हाँ यार, बाय द वे, आई सॉ योर ब्रांड, वेरी यूनिक प्रोडक्ट यार, आई मस्ट से। थोड़ा डिटेल दे, हाउ इट इज और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। it's a device for pain management. हम्म, It works on the principle of light therapy. गॉट इट, इंटरेस्टिंग। Any similar brand you work with? सी द थिंग, आई The reason I specifically asked this is because हमारा industry बहुत different है. आई गिव मोर वेटेज टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, अब आई शो यू वन ब्रांड वी started working like 2 months back. हाँ जी, हाय। हाँ यार, ओके, connect with you. सॉरी। Good to connect with you. Yeah, likewise, likewise. By the way, I saw your brand, very unique product यार, I must say. So थोड़ा डिटेल दे, how it is और क्या क्या challenges हम face कर रहे हैं। It's a device for pain management. हम्म, It works on the principle of light therapy. Photobiomodulation concept है. Light therapy का concept है. So you would have seen massagers and other things available in the market for pain relief और वो massage relief के लिए. But हमारा जो product है, it doesn't give you any massage sensation. It's purely light coming out of the device. There's a science behind it that light penetrates at a cellular level, reaches the source of the pain, and it Wow. does the magic there. If you've gone to any physio centers for any sessions, वहाँ पे देखोगे कि उनके पास भी एक बड़ा सा light therapy का हाँ हाँ होता है. हाँ, So see, it's a similar kind of thing, similar technology. हम लोग ने उसको portable बनाया. Tip to the device है. It's very small device. you can just put it. You just place it on your neck. For example, neck pain है तो neck पे place करो. Use case दो अलग है. So we call it the chronic pain condition, chronic and acute condition के लिए and recovery mode. Oh, Recovery got mode it, is yeah. for the long short-term conditions. Got it, interesting. And for how long we are into the business? So August 24 में हम लोगों ने चालू किया था D2C राउट. सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करके टेस्ट किया था मार्केट में, बट फुल फ्लेज जनवरी 25 से स्टार्ट किया था. Jan 25. और अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज ओनली D2C और वी डू मार्केट प्लेसेस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। We're only on the website as of today. Marketplace, we're starting it in a week's time. Registration, everything is completed. We're launching in Amazon by, say, maximum by 10th April, we should be live on Amazon. And what scale we operate today? What is the monthly revenue and the spend we do? Monthly, we're at a 2 CR revenue. We're spending about 1.2 CR on the ads performance. Very good. And it's a bootstrap or a funded one? We're a funded company. Interesting. A good product. Very interesting. Huh? India में these type of products बनाना is itself a mystery. And we're purely made in India. We have As a it's a- manufacturing unit चलो in बढ़िया। Hyderabad, so it's not China made. We get a lot of questions. क्या ये China से है? क्या ये India से है? It is not China. चलो, very good, very good. We have our own factory. हम लोग ने आज में भी हमारा फैक्ट्री दिखाया है. प्योरली बोला है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है. इसको चाइना कंपैरिजन मत करो. Proudly made in India, huh? Proudly made in India. ठीक है, तो now see, the success of the business lies on the results with the customers. I think that is a key of the business, right? Now tell me कि how many, मतलब how do you quantify that? We have CSAT score, NPS scores. So I'll tell you what happens. Like, so हम लोग ने बहुत सारा सीखा है last 6 months में I would say. So initially, at least in August, we used to sell off the product and then we never used to get feedback from the customers. Okay. Because we were comfortably growing at a 20% rate. January से start किया था, 0 से start किया था, 20%. August, I think July तक 1.1 CR comfortably hit कर दिया था with a very good ROAS of 1. मतलब 2.2 तो comfortably we were hitting consistently. Wow. So we were not bothered too much. So but August से we started seeing things slow down. मतलब we were taking a hit on the ROAS. Scale फिर भी हम लोग 2 CR पे पहुंच गए थे, but our ROAS dropped significantly and we are not able to bring it back. So we work with a brand name Avime Herbals. Shark Tank पे आए थे, नानाजी hair oil. So they deal with the problem of hair fall, right? So not exactly the same, but you know the use case is the same. There's a problem, we are giving a solution. We need to show the customer this is the use case, this is how to use it, this is the efficacy, and then repeat has become. अच्छा, अपने केस में repeat होता है वैसे? Repeat the question. है ना, because once you buy it's a long term thing ना.
long-term device, electronic devices. Oh, LTV is a problem, huh? That's where the major challenge comes. Recommendation is a key, but not the repurchase, huh? Repurchase is a very challenge. That's why we are suffering, honestly. Okay, every DTC, and I would tell you, I'll be very honest with you. We've spoken to multiple agencies. There's an agency working with us and all. Every agency has the experience working with brands which have lifetime value, repeat customers. 20-30% तो होता ही है हर agency. Yeah, 20% तो basic है बहुत. 20% तो basic है. Wow. But हमारे case में that's why the challenge is. Every time you need to go find a There is no existing customer. Wow, what a case study. Yes. It's always a new customer acquisition journey. It's new and engaged. There is no existing, huh? New and So performance marketing में, so we don't actually need to spend on the people who have bought from us, right? correct. वहाँ का we've excluded the audience completely. हमारे campaign में पूरा exclude कर दिया. Wow. So see, we have a repeat percentage, but negligible. Negligible. वो तो खुद ही कर लेगा. हाँ, they will buy it for the parent. मतलब 6 महीने यूज किया होगा, उसके बाद उसको satisfaction मिला छुट्टी होगा. वो आ रहे दो. Buying it for gifting purpose वगैरह वगैरह. Interesting यार, very interesting. Wow. मतलब it's also exciting as a marketer कि there is no existing audience at all. ठीक है. But I think in the future it may help when we bring a cross product in future, not today. Yeah. है ना? So I mean we're not very far off. 3 महीने में एक और product launch हो रहा है. But again उसका audience segment is slightly different. It's a product for menstrual pain. You told me you spend 1.2 CR with the revenue of 2 CR. It brings us to a ROAS of 1 point something. Correct. Yes. So what is a profitable ROAS for us? When I do the ROAS calculation, we take GST into our consideration. Yeah, obviously. हम लोग ने 1.33 पे close किया है March month को with GST into consideration after all the returns. We closed at a 1.33 ROAS. We will be in a comfortable position with a 1.8 to 1.2. ठीक है. We will be CM2 positive if we are hitting a 1.6 also. Cool. I like when founders talking CM1, CM2. Yeah, I mean all our conversations, and I think they're also invested back. So you need to CM, aware of these terms. Of course. Yes. Interesting. Okay, so and where the challenge lies today as a business? The challenge is scale, because last 6 months we've reached a point wherein neither we're able to bring back our ROAS, nor we are able to scale up Scale from the 2 business. CR. So दोनों got मिलकर act कर रहे हैं. Like since August we are fluctuating between a 1.8 to 2 CR revenue with the ROAS of 1.33 to 1.45. So I'll tell you Avime Hubbles. So what major changes that we bring to them was, see, top of the funnel का game है, मैं आपको बताऊँ. Sales campaign eventually is the one which उनका एक अपना algorithm होता है. It keeps on going with it. It's a game of top of the funnel. How do you enter that set of audience? जैसे example अब मैं इनकी बात करता हूँ. So I'll give you exact case study. Delhi NCR में सबसे बड़ा problem है hard water का. From which city are you? Hyderabad, ठीक है. So I'm from Delhi NCR. Hard water is a major problem which led to hair fall. Same is the case with Pune. Same is the case with Mumbai. ठीक है. Now in some cities there is a different set of problems. There's a high corporate led, so there is a high set of tension which led to hair fall. Now we were able to identify again from a survey. The customer understanding is extremely important in this category, you know, because it's not fashion की जहाँ जो fashion दिखाया बेच दिया. You need to understand consumer problem. So we identified 3-4 set of problems which were there. One was, you know, Triya sells minoxidil a lot. So minoxidil is like an alcohol. Initially it gives good results, but then you have to be addicted with it, because if you leave minoxidil, it will give you adverse effect. Okay. So then we started identifying the opportunities, and we started making journeys of different problems in different states, because state-wise scaling is extremely important, especially 10 CR के ऊपर. In your case again we need to see how the frequency is working out for us, because क्या होता है ना, किसी states में demand बहुत होती है but reach कम होती है, तो हमें ad account पे वो figure out करना पड़ेगा. And since you are meta heavy, तो वो easy भी रहेगा मैं identify करना. Then we started making those great set of content that hammers the audience. ठीक है. Again, content के भी multiple variations है, like you said, factory content, EGC content, UGC content. As a founder, you calling your customers and taking the feedback. This is something which has worked extremely well for us. So a lot of content that are there. Then अपने केस में कैटलॉग तो काम करेगा ही नहीं, बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट है और इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्ट है. आई थिंक कैटलॉग पे तो कुछ होगा भी नहीं, राइट. सो क्रिएटिव देन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पूरा एक फनल क्रिएशन है, ठीक है. सो आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक इज टू ऑडिट थिंग्स,
And but before that, I'll just quickly show you the data capabilities that we have, so you also have an idea. Okay. Got it. So this is our internal dashboard Tejas towards greatest ecosystem. Okay. So now on Tejas, what we have done, we have integrated everything, so it gives us a very quick view to understand things. Okay. अब quickly वो data दिखाता हूँ, how does it operates. So as you can see, Meta daily spend, Google revenue ROAS, परसेंटेज स्पेंड ऑन मेटा, कितना मेटा डैशबोर्ड पे रोआस आ रहा है, कितना गूगल डैशबोर्ड पे आ रहा है, कितना हमारा कहाँ कंट्रीब्यूशन है. मेटा का फनल, गूगल में डिमांड जिन, वीडियो, पी मैक्स, ऐप कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, कहाँ पे कितना स्पेंड है. ऑडियंस सेगमेंटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा कितना परसेंट स्पेंड डेली प्रोस्पेक्टिंग पे जाता है, कितना एग्जिस्टिंग पे जाता है, कितना न्यू पे जाता है. ठीक है. सो आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज कि आई डोंट वांट टू सी रिपोर्ट्स ना क्विकली विजिबल होना चाहिए. जब ब्रांड फटे, मतलब डाउन जाए 10 दिन बाद, तब जाके मैं ये प्रॉब्लम ना आइडेंटिफाई करूँ. इट गेट्स आइडेंटिफाइड विद इन द 2 days ऑफ द प्रॉब्लम गेटिंग क्रिएटेड. ठीक है. क्रिएटिव एनालिसिस समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आपका एडवांटेज में रील का, पार्टनरशिप का, कैटलॉग का, स्टैटिक का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेंड है, कितना कितना रोआस है, बॉटम में कितना है, टॉप ऑफ द फनल में पार्टनरशिप, रील, स्टैटिक, कराउजल, कितना रोआस है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो आई अंडरस्टैंड द नंबर्स क्विकली. डे ऑन डे ट्रेंड्स आ जाएंगे आपके पास. इसके बाद जैसे एग्जांपल, कुछ कंटेंट आप क्रिएट करेंगे, कुछ कंटेंट मैं क्रिएट करूँगा, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि ब्रांड के एंड से जो कंटेंट आ रहा है उसको क्या रिस्पॉन्स है, डीएस के एंड से जो कंटेंट आ रहा है उसको कितना रिस्पॉन्स है. ठीक है. सो एग्जांपल, इस ब्रांड में लास्ट 28 days में हमारा कितने एसेट लाइव हुए, कितने क्रिएटिव लाइव हुए, कितनी रील्स, कितने स्टैटिक, कराउजल, इंट्रो कार्ड विद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा कंटेंट यूटिलाइज हुआ, कौन सा स्केल अप हुआ, कौन सा का परफॉर्मेंस खराब था. यू कैन observe the creatives accordingly. I click on the link and I just see the ad also. So this is that quick. उसके बाद overall creative segmentation, then Google का data है. उसके बाद inference engine है हमारा. Inference engine हमें बताता है कि top of the funnel में कितना percentage change आ रहा है, model में कितना आ रहा है, bottom में कितना आ रहा है, Z score डाला हुआ है, deviations डाले हुए हैं. Because see, when you have worked with a lot of agencies, right? We work with 40 brands right now. So the art of an agency is not doing the best performance. It is also how to manage 40 and deliver that quality of service every day, every time with every marketer. Correct? Because let's say we are going to connect once a week and I'm going to sit internally twice with the team. But team is the one who sits daily. So as an agency owner, my job is not to just find brands and find team. It also to make my team more effective when they work with Yash. Correct? तो उनकी डेटा कैपेबिलिटीज़ बहुत हाई होनी चाहिए. बिकॉज माई थिंग इज़ व्हेन यू टॉक टू मी एंड व्हेन यू टॉक टू माई टीम, नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, जो होता है बहुत सारी बार. एंड आई एम श्योर वो एजेंसीज, वो ब्रांड ओनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. Any similar brand you work with? The reason I specifically ask this is because हमारा इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है. And I keep saying this also. We are not only selling a product, we are creating a category. Now see, the thing, I give more weightage to the problem solving skills. ठीक है. अब I'll show you one brand we started working like 2 months back. So it's a quick commerce business in Mumbai, operating with multiple dark stores. Every dark store has different inventory. So I'm just giving you an example. If there is an Andheri and there is South Mumbai and North Mumbai. North Mumbai inventory cannot sell in South. South cannot sell in North. ठीक है. And we need to manage the entire ad account in that function. And there is a certain set of pin codes where the delivery goes fast. There is a certain set of delivery goes slow. There's a brand-wise entire process also happens. Inventory rollouts very faster. So the similar question this brand owner had with me. The reason of I'm telling you, because I never work with a quick commerce business, and it's very limited अवेलेबल इन इंडिया. मतलब 10 ब्रांड होंगे ना जो क्विक कॉमर्स करते होंगे. हेयर कम्स द प्ले ऑफ understanding the problems and the problem solving skills, how you understand that business and make structures. And with Not, it was extremely tough, the business model, and सिर्फ मुंबई है, पूरा पैन इंडिया है भी नहीं. So we need to channelize an entire spends and in a way and understand it. So I think you will get an answer once we'll sit with you with an audit, because the idea is ki how quickly you grasp things and get things function. Because see, me as an entrepreneur loves G2C. मतलब this is what we eat, sleep and repeat. तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है when we work with a tough case studies, because हमें भी सीखने को मिलता है ना. एक basic brand so आता रहता है, but when we get brands like Not and you guys, then the life becomes more challenging and fun. तो वो चीज़ है. तो honestly किया नहीं है, but हाँ, one thing I can assure you is the problem solving skills that we have for sure will get a grasp to it. So
I think the next step forward, you share me the access and everything. ठीक है, let me do an audit. It will take me 4 to 5 days. ठीक है, and then let's sit back again and let's discuss. Perfect, sounds good. Let me know कहाँ पे क्या details. हाँ, part will share. Done. All right. Thank you so much. Perfect. Thank you. It was great talking to you. Bye. Same. भाई how is our client? देखो बस बिजनेस का वो क्या है डिफिकल्ट पार्ट इज कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है ही नहीं, मतलब तूने ले लिया, अब जीवन में तेरे को वापस बेचना ही नहीं है क्योंकि अब ले लिया ना, इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट तो अरे टूट गया तो मतलब वर्ष ने कहा कि बहुत वो तो ऐसा कस्टमर जो खुद ही ले लेगा, उसमें आपको मार्केटिंग नहीं करनी, तो दिस इज अ बिजनेस व्हिच ऑपरेट्स ऑन जीरो एग्जिस्टिंग कस्टमर, है ना फन। और अभी मेरा कितना ज़्यादा बड़ा रोल है इसके अंदर, देख रहा है तू, क्योंकि समझ रहा है एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, हम वहाँ पे भी क्या एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन, सो इट्स लाइक यू नो पेन है तो पेन पे आप लगा लो एंड देन इट गेट्स सॉल्व, है ना। हाँ इट्स माय, ठीक है, तो इट्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन हेयर फॉल पेन रिलीफ, ठीक है, तो लाइक टू लाइक बिल्कुल इसको मैंने अभी में चिपकाया है पूरा, ठीक है। तो अभी ब्रांड आएगा, ऑडिट करते हैं, बढ़िया से प्लान बना दो, ऑन बोर्ड करते हैं, ठीक है, तो कूल, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है, फंडेड कंपनी है और एवरीथिंग इज़ मेड इन इंडिया, नथिंग गोज फ्रॉम आउटसाइड, एंड अभी वेबसाइट रिवैम्प भी हो रही है और फिलहाल रोआस है 1.6 का, 1.8 पे प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल है। गूगल पे 2% स्पेंड है, मेटा पे 100% स्पेंड सेल्स पे होता है। एक अच्छा द बेस्ट पार्ट विच यू विल लव इज, क्योंकि एक बार किसी ने परचेज कर लिया ना तो कभी भी रीपरचेज नहीं होता, सो दे हैव 0% रिपीट, मतलब 0.1%, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब आई एम वेरी द केस स्टडी इज द एग्जिस्टिंग हैज़ टू बी जीरो, इट्स ऑलवेज अ न्यू कस्टमर एक्विजिशन दैट यू नीड टू रन फॉर एंड नेवर डन अ सेल इन द पास्ट, ठीक है, कूल। तो अभी पार्थ अकाउंट एक्सेल भेजेगा और शॉर्ट करो, थैंक्स।